Hello friends, hello my students, a very good evening to everyone. Today we have met here for a special purpose which is nowadays in the trend, and that is CUCET. For the past many days we have come across many students asking the same question ki what is CUCET and how it is going to help out, and when UGC had announced that now the admissions are going to be based on CUCET, that is Central Universities Common Entrance Test. So many of the students thought that now there is no need of studying, there is no need of the weightage of boards. Why to go to tuitions? Why to take the test seriously? Why to take pre-board seriously? Means there are many questions pondering upon. And today in this special session, I'm going to discuss the same thing. I'm going to tell the same thing. If anyone watching this video has any query related to the CUCET, you can definitely call me up, or you can definitely message me on my WhatsApp number, which I'll be sharing soon. So let us start with this word. What is what we call as CUCET? What is it about? How it is going to ease out the admission process? When it would be held? What will be the subjects likewise? We will be discussing all of them in this special session. Let me start with the word CUCET. CUCET is an abbreviation for Central Universities Common Entrance Test. And this is an all India based test which would be conducted by National Test. हमारा जो NTA है, they are going to conduct this. They are the authority, which would be for the integrated undergrads, postgrads, research program, everything for the central and state universities in India. And around 40 to 45 universities have agreed to participate in this CUCET exams, which will be now the main criteria for admissions for class 12 students. Many of us are well aware about JEE, Joint Entrance Exam, NEET, the National Eligibility Exam for medical students. So now CUCET is equivalent to what we call as JEE, NEET. They were based for engineering and medical, whereas CUCET is going to be common for BBA, BCom, BCom honors, or BSc, anything which is the contemporary courses that we run in various universities. The very first question is why the CUCET was introduced. There was, for the past few years, there has been an exaggerated increase in the percentage. Means when we were young, for us getting 75% was considered as a boon. Today 99, 99.8, 100. Even languages like English, the students are getting 100. Whereas if you look into if you talk to a researcher, if you talk to any expertise, they will tell that we cannot give 100% in languages. But that is because in the literature part, we may not be able to give. But when it comes to the grammar part, there are questions which are set up in that way where the child can get 100 on 100 also. So this has made admissions a mission, specifically to universities like DU,
where students across India dream to come over. Some dream for Ramjas, some for SRM, for SRCC. Now, there are many sincere students who are not able to get into these colleges even after getting a good percentage like 96 or 97. So CUCET is the answer to those questions, those people, those sincere students जिनके 97 98 percentage भी आ गए लेकिन उनको admission नहीं मिला, या फिर there are students who may be very intelligent but they have not scored well in their boards. 85 percentage आए हैं. 85% is not a bad percentage, but the child couldn't get into a college. That is because in the colleges, we take the admissions on the basis of the marks, first come, first basis, and the seats are limited. And when, say, a number of seats, there are 100 seats in a college, and if there are 5,000 people who have already scored 99, then where will a child with 95% get the admission? So this has given an unrealistic positions. Moreover, one more problem is universities are open for all the students. So many a times it happens that a student belonging to the same state doesn't get into that university, whereas a student from another state gets because of this. So to end up all these mess, CUCET has been introduced from this year onwards. Very first is, what is CUCET? Now the second is, what will be the criteria they would fix up for getting admission? Means chalo, pehle to ye tha ki if I am getting this much of percentage, then I'm going to get this college, or I may not get. So now what will be the criteria? In CUCET, we will be having 3 parts. Matlab, it depends. In some there might be 2, but we may be having the exams divided into 3 parts. Because in India we have many languages, and 13 languages have been recognized right now, which includes your English, Hindi, Assamese, Tamil, Telugu. So one compulsory language everyone has to take, and in that language you will be having the exams which we had in term 1, comprehension. Secondly, finding the synonyms or antonyms. Basically it would be grammar and reading skills based. As an English teacher, I can say that you all need to ace your skills by reading more and more books, preparing yourselves with the very basics of English, like prepositions, conjunctions, interjections, synonyms, antonyms, phrases, spellings, homonyms, anagrams. These are the areas which will be assessed. Secondly, you will be having, the second part will be your domain subjects. Now the question comes, what is domain? What do you understand by the word domain? So domain means a child might be belonging to, say, humanities. The child may be belonging to, say, commerce. In commerce, a child might be having the subjects like accounts, PST, business studies, economics, and of course maths. So there, when you are filling up the form, there would be forms. One will be the registration, and then a child who is in, say, humanities, the child wants to go for English honors, or the child wants to go for Pole honors, history honors. Or when a child is from commerce side, BCom honors. So you will be filling up those different forms.
Means the form would be single, but you have to fill up for two different exams on the basis which you will be. It's not like you will be giving the exam twice, but you will be analyzed. You have to also give those papers. अगर आप बीकॉम करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि आपका बीकॉम नहीं बीबीए में हो जाए, तो बीबीए का आपने सब्जेक्ट लिया है, उसका नाम क्या, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज. फॉर बीकॉम यू हैव टेकन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स. तो जब आप टेस्ट दोगे तो ये चारों का मिलकर आपको जो है यू विल बी गिविंग. तो द मेन डोमेन लैंग्वेज विल बी बेस्ड ऑन व्हाट you are going to choose the stream which you have aspired for yourselves. अगर आपने सिर्फ बीकॉम का सोचा है तो इंग्लिश तो जाएगा ही जाएगा, मतलब वन लैंग्वेज तो जाएगा ही. इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर स्टेट एंड यू वांट टू गो फॉर दैट, वो लैंग्वेज. सेकेंड, आपके दो सब्जेक्ट्स होंगे डोमेन में आपके, एंड मे बी फॉर सब्जेक्ट्स ऑफ ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स, मैथ्स माइट बी कंपल्सरी. And then the two subjects like accounts and eco, accounts and BST, that would be taken. मतलब आपका टेस्ट उनमें से होगा. And the third, which we say, the third part would be the aptitude. आपका जो थर्ड जाएगा वो होगा जनरल एप्टीट्यूड. Now what is general aptitude? जो हमारे BMS में, BBA में अभी भी होते हैं. लॉजिक, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस आपका, that all would include in your aptitude, your interest, abilities. So these will be the three parts into which CUCET is going to be done. Now the next question is, that means CBSE exams are of no use now. So yahan par my answer would be a big no. It is not that CBSE exam is now going to be of no value. The very first is where the value comes. Where the value comes, the very first is your domain subjects. जो आपके domain subjects हैं, that will be from your NCERT and that would be of 11th and 12th. मीन्स अगर आपने बीकॉम लिया है तो आपका अगर और आपने डोमेन सब्जेक्ट अकाउंट्स एंड बीएसटी डाला तो आपको 11th-12th का बीएसटी का ही पेपर बन के आएगा. यानी कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा. दैट डजंट मीन कि आप बोर्ड के लिए पढ़ना छोड़ दोगे. एंड इफ यू हैव टेकन, से आप बीएससी करना चाहते हो, बीएससी फिजिक्स करना चाहते हो, तो आपका डेफिनेटली टू आपके सब्जेक्ट्स होंगे. वन विल बी फिजिक्स एंड द सेकेंड वन माइट बी केमिस्ट्री. तो द paper is going to be based on NCERT 11th and 12th. So that means your study for CBSE exams will be definitely helping you out. So पढ़ना छोड़ना, it's not going to be. इसका दूसरा reason I'll tell you later. The next is what will be the mode. ये पेपर जो है किस मोड से होगा. So the paper will be based on CBT, यानी कि computer based test, as we already have for our other entrance exams. That would be CBT. MCQs होंगे आपके, and definitely there might be negative marking also in medical and all. We have that is there. तो दैट वुड बी बेस्ड ऑन CBT. वो आपके पास अभी एक हफ्ते में आ जाएगा. व्हाट विल बी द सिलेबस, व्हाट विल बी दी एग्जैक्ट क्राइटेरिया, वो भी आपको 1 वीक में मिल जाएगा. These all points have been discussed by the Vice Chancellor and it has been given to the teachers. तो next is how my percentage will be calculated. बोर्ड की कितनी वैल्यू होगी. तो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूं कि बोर्ड्स की अभी ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स हैव नो वैल्यू. नो 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 नो. There will be minimum value and each university will be having their different criteria. Like DU may keep 75%, 70%. मतलब minimum आपको इतना % तो लाना ही है to appear for the entrance. मतलब ये एक criteria for the admission.
नॉट फॉर द एंट्रेंस, एंट्रेंस में तो आपका पास चलेगा, लेकिन फॉर द एडमिशन दे में कीप अ क्राइटेरिया, लाइक द स्टेट यूनिवर्सिटीज में कीप दैट हमारे को मिनिमम 80% चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में 75 चाहिए, मतलब देयर माइट बी सम, बिकॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट हैड टेकन एडमिशन इन SRM 5 years बैक, तो वहाँ का एक क्राइटेरिया था कि इन इंग्लिश द परसेंटेज शुड बी मिनिमम 75%. So every university will be setting their own criteria at the time of admission. It will not be exaggerated 1995, but yes, minimum 70 to 75 will be definitely there. एंट्रेंस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, एंट्रेंस का क्राइटेरिया है यू शुड पास योर 12th स्टैंडर्ड, बट टू एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी दे विल बी हैविंग देयर ओन क्राइटेरिया, कि वो लोग उन्हीं बच्चों को लेंगे जिनका मिनिमम इतने परसेंटेज है 12th में. तो यानी कि आपका 12th जो है वो, अभी आप ये सोच लो कि मेरा बोर्ड तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोर्ड की तो कोई ज़रूरत नहीं, चलो मैं ट्यूशन छोड़ देता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, या मैं प्री बोर्ड छोड़ देता हूँ, तो डोंट बी इन दैट मिथ, डोंट बी इन दैट मिथ. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ माई percentile will be calculated. Now मैं बार बार एक वर्ड बोल रही हूँ percentile. तो what is the percentile about? See, in a simple formula, अगर आपके 95 मार्क्स हैं तो वो देखेंगे कि आपसे ज़्यादा, यानी कि आप अगर उस परसेंटाइल पे, तो आपसे आगे कितने लोग हैं, and on that basis normally the rank is established. And in many of the cases what happens is, आपका जो रैंक होता है, मे बी अ चाइल्ड हैज गॉट से 750 में से 700 मार्क्स है, तो इट ऑल्सो हैज कुछ परसेंटेज ये भी रहता है कि आप में से जिस बच्चे ने डिफिकल्ट को ज़्यादा किया है उसके 750 है, जिसने इजी को करके 750 है, तो जो बच्चा डिफिकल्ट में है उसका रैंक हमेशा ऊपर जाता है. दोनों के स्कोर्स एक हैं 750 750, बट ही माइट हैव गॉट फर्स्ट रैंक एंड आपका सेकंड रैंक होगा. दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन टाइप यू हैव अटेम्प्टेड, एंड ऑन दैट बेसिस योर रैंक विल बी देयर. दिस इज हाउ आपका CUCT होगा. यानी कि सबसे पहले आप जाओगे, अभी आपके फॉर्म्स खुलने वाले हैं, आप रजिस्टर करवा दोगे, आपने जो जो कोर्सेज लेने का सोचा हुआ है, लाइक इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स यू मे गो फॉर BCom और BBA और BCom ऑनर्स, इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज यू मे गो फॉर होटल मैनेजमेंट, you may go for BA in different arenas. If you are from science you may go for BSc General, BSc Bio, Zoology. तो आप उसको फिल करोगे. देन आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे. से आपने BCom ऑनर्स और BCom जनरल दोनों के लिए भर दिया है, तो फॉर BCom ऑनर्स यू विल बी फिलिंग 2 डोमेन सब्जेक्ट्स, दैट इज अकाउंट्स, एंड हो सकता है कंपल्शन मैथ्स का हो, तो मैथ्स प्लस 2 डोमेन सब्जेक्ट्स हो जाए. एंड फॉर अनदर आपका, तो यानी कि आपको इन 5 सब्जेक्ट्स में यू हैव, डोमेन में आपको जो है यू हैव टू गिव द एग्जाम. देन आपने लैंग्वेज एक चूज करना है, दैट विल डिपेंड आप कौन सा लेना चाहते हो. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स यू हैव गॉट इन ऑल दीज 3 parts, language, domain, subject, aptitude, you will be ranked. Now you will be getting a percentile 75, 80, 90, 95. अब आता है द रोल ऑफ द यूनिवर्सिटीज. अब आप सोचो वाह, मेरे को तो, अब मेरा तो हो गया, तो मेरा तो सीधा SRM में, मेरा तो सीधा SRCC में हो जाएगा, तो आई विल बी गेटिंग माई ड्रीम कॉलेज. तो इट इज़ नॉट सो ईजी. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ये इतना आसान नहीं है. Every college will be having their criteria on which ground they are going to, on what percentile they are going to admit the students. तो अगर आपका NCERT थरो है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखा है, आपने सिंसियरली स्टडी कर रखा है, आपके परसेंटाइल इज ऑन द हायर साइड, तो यू हैव डेफिनेटली मोर चांस टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज वॉट एवर इट इज. Every university which is going to be participating in this CUCET, they will be criteria उनका अपना सेट करेंगे. Colleges will be also setting their criteria कि ये हमारा मतलब कि minimum criteria होगा जिसमें हम बच्चे को जो है admission लेंगे. Will be taking the admissions on the in this minimum, मतलब इतना percentage होना चाहिए. So that would be
how your exams, your what we call as sincerity in your 12th standard is going to help you out, and it will also help you out in acing that particular test. This is how it will work out. Now the next criteria जो हमारा आ जाता है वो है कि that means, मेरा जो कहने का मतलब था, the admissions will be at the discretion of universities. मतलब हर यूनिवर्सिटी अपना बताएगा कि हम जो है दे में इवन सेट अ क्राइटेरिया फॉर 12th स्टैंडर्ड की मिनिमम बच्चे का 70% होना चाहिए या मिनिमम परसेंटाइल इतना होना चाहिए. दे में सेट अ क्राइटेरिया फॉर दैट. तो दैट वुड बी हाउ द परसेंटाइल विल हेल्प यू आउट कि आपको किस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज जो है वो आपको मिलने वाला है. दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉलेजेस और द यूनिवर्सिटीज. Right now, around 45 colleges are going to participate in this. 45 universities are going to participate. So, हो सकता है a person who is in चेन्नई, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ मद्रास में जो भी है आपका मद्रास यूनिवर्सिटी, दे विल ऑल्सो बी पार्टिसिपेटिंग. तो द चाइल्ड हैज अ फेयर चांस. उसको मद्रास यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है वहां भी मिल सकता है, डीयू के अंदर भी मिल सकता है. So आपका जो if you are in that criteria which the college has set, the universities have set, so you will be able to get the admissions. So that is how the colleges will be having their fair share. मतलब उनका जो एक शेयर होगा वो इस तरीके से होगा कि वो किस कॉलेज के अंदर कौन सा क्राइटेरिया होगा. यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी को थरोली करा हुआ है, अभी भी करना ही है आपको, बिकॉज इन द सीबीएसई आप अपने प्री बोर्ड्स को भी ले रहे हो, तो देन यू विल बी एबल टू एस दिस एग्जाम्स वेरी नाइसली. एंड देन वंस यू हैव cleared the exams, then you have to wait for 10 or 15 days. You will receive the result, that what is in which criteria you have filled up your in which criteria you have been placed, what is your percentile. Then जैसे हमारे नीट के अंदर क्या होता है, नीट वगैरह में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, योर एडमिशंस विल स्टार्ट. वहाँ पर होता है कि इस मतलब कि एवरी कॉलेज जो है अपना एक क्राइटेरिया फिक्स कर देता है. वी फिल द चॉइस फिलिंग. तो आपके पास एक चॉइस होगा यहाँ पर भी, एंड देन बेस्ड ऑन योर परसेंटाइल the universities will give you the admission. मीन्स जिन बच्चों ने या जिनके घर में किसी बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह दिया होगा, तो दे नो द क्राइटेरिया. वाइल वी गिव द एंट्रेंस एग्जाम्स, व्हाट हैपेंस इज द रिजल्ट्स कम, द स्कोर्स कम. स्कोर्स के बाद क्या होता है, द कॉलेजेस एक्सेप्ट कि इस स्कोर पर, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं दे आर टेकन ऑन द हाइएस्ट, मतलब इन मेडिसिन आई एम टॉकिंग. अगर बच्चा एमबीबीएस में है, इफ द चाइल्ड इज इनटू द स्कोर ऑफ से 600, तो उसको कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एंड देन आपके जो सेकेंड सेमी आपके आ जाते हैं, तो ऑल द यूनिवर्सिटीज़ आपके जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सेंट्रल एज वेल एज आपके, मतलब दे हैव द ऑल इंडिया कोटा. तो एंड देन देर आर सम कॉलेजेस, सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विच पार्टिसिपेट. तो अगर आपका उस कोटा, उस मतलब की नंबर में है, तो आपको जो है जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं या बेस्ट मेडिकल कॉलेज है वहाँ एडमिशन मिलता है. तो यहाँ पर आपका क्या होगा, वंस योर परसेंटाइल इज फिक्स्ड अप, then every university or college is going to, maybe the colleges are coming with their individual criteria. तो आपको पता लग जाएगा this will be the criteria, and if you are fit in that, you will be getting the admission. तो it is not marks based, but it is knowledge based. तो मार्क्स की डेफिनेटली अब वो 99 95 नहीं आए हैं, दैट वुड नॉट बी अ वेरी बिग issue. लेकिन अभी भी अगर if you want to go into your dream college, you need to have the thorough knowledge. अभी तक क्या था, बच्चे मैक्सिमम रट्टा मार लेते थे. ओके इतने क्वेश्चंस किए, इतना हो गया, ठीक है. नाउ यू नीड टू हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो 12th के मार्क्स may not be
the criteria, but 12th standard की studies are going to be. So boards are not void, but yes, उसकी जो value है उसको change कर दिया गया है. Now yours should be more on the knowledge based. And rank criteria आपका मतलब कि आपका percentile criteria रहेगा. So you have to be prepared on that. For the students who are in Delhi, DU and JNU दोनों जो है इसमें participate करेंगे. So if you are applying for BBA in BBA or BCom or any course in JNU and DU, आपका जो है मतलब आपको DU में मिलेगा या JNU, that would be depending on JNU क्या criteria fix करने वाला है, DU के colleges कौन से criteria fix करने वाले हैं admission के लिए, that would be based. And if you are fitting in that, then it is the fittest or survival of the fittest. That would be the phrase that would be used. So this is how CUCET जो है वो आप लोगों को help करेगा. तो my students, my viewers, I would humbly request that don't take anything on a very lighter ground. Definitely the प्रेशर जो अभी तक माउंट था, द प्रेशर विच वॉज माउंटेड ऑन द स्टूडेंट्स की उनको जो है दे नीड टू गेट 99 इफ दे वांट टू गो टू अ कॉलेज इन अ द बेस्ट कॉलेज. तो देन वो चीज आपकी नहीं रहेगी, आपके 75% भी हैं, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द एडमिशंस इफ यू आर इन द क्राइटेरिया ऑफ परसेंटाइल. So now, not for the marks, but for the percentile, you have to see. जैसे हमारे IIMs वगैरह होते हैं तो उनमें परसेंटाइल माना जाता है कि विद दिस IIM अहमदाबाद में जाना तो आपका परसेंटाइल इतना होना चाहिए. इफ़ यू वांट टू गो फॉर IIM कोलकाता तो आपका ये परसेंटाइल होना चाहिए. सो दैट वुड बी द बेस. सो बी रेडी. इफ एनी वन ऑफ यू हैज़ any query regarding this, then you can call me up on my WhatsApp number, or you can just leave a message on my WhatsApp, Dr. Rama Raghavan, 9910522680. From now, today onwards, start your practice. Definitely you will be getting around 1 month for preparation of this exam, and 1 month is more than enough because you are going to be tested on the grounds of your NCERT basically on the 11th and 12th only, on the domains which you have already studied. So easily you will be having 1 month after your boards, roughly around 1 month. And otherwise also you can ace up your skills of comprehension, you can ace up your skills of grammar if you're giving English. If you're giving your other language, आप अपने language के जो मतलब कि जो आपके पास कोई books है, you can take up. If you want to take up a small शॉर्ट टर्म मतलब आप चाहते हो कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह चाहिए एंड यू वांट टू गो फॉर सम ट्यूशंस और यू कैन से सम इंस्टीट्यूट, you can take up. And while studying your domain subjects like accounts, economics, BST, be very very particular, जिससे कि when the questions come you are able to answer. For the aptitude, definitely again I'll say two. Either you can take up a small short-term course, short-term series, or you can definitely take up a book. You can side by side whenever you are getting the time, you can number of questions you can just go on attempting. जैसे हम क्विज वगैरह करते रहते हैं, क्रॉसवर्ड्स वगैरह करते हैं, वैसे आप बैठ के कर सकते हैं. तो आपको जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट कि यही आएगा. कॉम्प्रिहेंशन है तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपके जो है यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड द क्वेश्चंस, आपसे फ्रेजेस पूछे जाएंगे, फ्रेज का मीनिंग बताना पड़ेगा आपको, एंटोनिम्स सिनोनिम्स निकालने हैं, एनाग्राम्स निकालने हैं, होमोनिम्स निकालने हैं. बट इन एप्टीट्यूड आपका जनरल एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स हो सकता है, लॉजिक आपका हो सकता है. तो यू कैन जस्ट गो, आपके पास गूगल वगैरह में भी यू हैव नंबर ऑफ शीट्स, वर्कशीट्स, फ्रीबीज आपके बहुत सारे, तो यू कैन टेक अप दोस एंड यू कैन एस अप and get a good percentile to get into your dream college. With this, I'm going to just finish off this session. Very good bye to everyone.
Once again, the same thing, that if you have any problem, you can definitely contact me on my number. Bye and best of luck to everyone.